Hi everyone, hope you guys are doing good. Welcome to our interview preparation series. Today's webinar is very special for all of us because our mentor for the day, Piyush Khandelwal, is going to design an e-commerce website. And apart from that, he will also tell everyone about OOPS and some of the object-oriented analysis concepts. So please stay tight till the end. And if you have any queries, then you can drop them in the comment section. And apart from that, if you want to ask anything to Piyush regarding the whole concept of OOPS or regarding anything related to the website designing, then also you can just check out the form given in the comment section. So you just have to fill the form and write down your question, and our team would be taking up each and every question one by one. So after the end of the session, Piyush will be answering all your questions. Now, without wasting any time, I will call Piyush to the stream so that he can tell you more about today's webinar and how exciting it is going to be. Hi, Piyush, how are you? Yeah, hi Sidra. I'm good. I'm good. How's you? I'm also good. तो पीयूष आज का वेबिनार बहुत डिफरेंट है बिकॉज आई थिंक इतनी बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने क्लोन करी है वेबसाइट या फिर कोई फ्रॉम द स्क्रैच वेबसाइट डिजाइन कर रहा है तो हाउ इज टुडेज वेबिनार डिफरेंट कैन यू टेल अस Yeah, actually, what happens is, see, in today's session, we would be learning object-oriented analysis and design of any system, right? So you have to learn because it does not happen the way कि आपने कुछ सोचा, कोई product आपने सोचा, उसको design करना शुरू कर दिया. What you have to do is you have to do certain analysis, you have to make certain designs, then you can start coding of it. तो क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कंपनीज फॉलो करती हैं, क्या चीजें रहती हैं, कैसे डिजाइन बनाए जाते हैं, क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं. वी वुड बी कंसिडरिंग दोज थिंग्स टुडे एंड वी विल बी टेलिंग आवर यूजर्स आल्सो राइट कि व्हेनेवर दे लाइक they all are like upcoming entrepreneurs, right? And when the idea strikes their mind, how to go, like how to plan the roadmap to execute their ideas, like they will definitely get that thing from the session today. Okay, great. So now I'll be exiting from the stream, and I just want to remind you guys once again that the form is linked to the comment section, and I've started it also. तो अगर आपके पास कोई भी question हो, तो बस आप उस form को click करना and अपनी details fill करके वो question डालना, so that Piyush end of the session में वो questions one by one ले सके. Okay, now over to you, Piyush. You can carry on from here. Thanks a lot. Thanks a lot. So, guys, very good evening, and just a small acknowledgement from your side, right? If I'm clearly audible, there is no echo, right? If you can type yes and let me know whether my voice is absolutely clear to you, so that we can proceed with the session. A small acknowledgement from your side. Thanks, Rakesh. Thanks a lot. Yes, thank you, Deepank. Okay, so it has been a long time since I have been on the screen teaching you or giving you certain ideas, right? So if you have seen our Geeks for Geeks practice channel, we have shared a lot of sessions over there, some certain informative sessions for you people. I hope all of you might have subscribed to our channel, right? And you might be visiting the channel, enjoying the things that we are discussing over there, the knowledge that we are trying to give you to give you, right? So, okay. So Udipan has one question. Today's webinar is going to approximately 2 hours, right? And it depends. It depends on your interest as well. We can extend, but if the condition is you must be finding it interesting. Okay, thanks Gokul. Thanks Abhishek. Thanks a lot everyone. And I'm really excited to discuss this topic and why I've selected this object oriented analysis is a special reason about it, right? The reason for that is Pankaj is saying a bit of echo. Okay, I'll try to fix it. Okay. So generally, the reason why I have selected this topic, why we have selected this topic, object-oriented analysis, is when I was in my college, right, and we had to develop something, right. We want to work on some product, whether it's a website or it's some application, right. So what
practice we used to follow is we directly used to jump on the coding part, right? We never realized this thing that yes, there could be certain process, and that process makes your execution very easy and smooth. Generally, what happens when you directly start coding your ideas, and what happens is you create a mess of the code, right? बहुत सारा code मेरे पास इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, and that looks like very clumsy, right? I don't have any plannings to execute. और कोई नया feature, when some new feature comes to my mind, यार ये feature भी होना चाहिए as per the user, the customer requirement. जब उस feature को हम उसमें add करना चाहते हैं तो it becomes very difficult because we didn't plan it very well that way, ठीक है. And second thing is object oriented analysis and design is a part of like engineering course curriculum in like most, I can guarantee that in each and every college, right, every engineering student is going through this course of object oriented analysis. So this might be helpful for you people in that way as well, right? Okay, so let's start with a very basic thing, right? Because when the idea of object oriented thing comes, right, the first thing that comes to our mind is what is an object. Okay, so if you guys can help me, like if you guys can tell me, right, what is your definition of object? आपको क्या लगता है कि object क्या होता है, क्या हो सकता है? ये आपको पता है तो you can write the exact definition, but don't copy it from anywhere. अभी आपके दिमाग में जो ऑब्जेक्ट को सुनकर पहला आइडिया आपके दिमाग में आता है, यू हैव टू टाइप इट ओवर हियर, राइट? क्या लगता है आपको, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? Guys, this session is going to be interactive. We will be real world entity. Prachit is saying real world entity, right? Okay. Waiting for your responses, right? Waiting for your responses. Okay, object is an instance of a class. Nikhil Patel is saying representation of something which exists in real world. Akshay Akash is saying, okay. Sakshi, blueprint of a class. Okay. Object holds some value, instance of a class. मतलब मेरे को लगता है ना कि most of you are computer science engineer and has gone through this course and you know the definition, right? कुछ definition आपको पता है, ठीक है? But let me tell you, blueprint of a class is not an object. Shivam, like most of you are writing blueprint of a class, right? शायद आपको अपनी definition को, आपको book को फिर से खोलना पड़ेगा या जिस resource से आपने पढ़ा उसको check करना पड़ेगा, because it's not a blueprint. Okay, Pankaj is saying object is something that gives context to a class. Okay, reference to a class. Great, great. Instances of a real world object. ठीक है, ठीक है. Fine. चले. अच्छा, एक चीज, एक और क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है. नाउ द थिंग्स विल गेट ऑन रिफाइनिंग, थिंग्स विल गेट लाइक स्टार्टेड रिफाइनिंग फॉर यू, ठीक है. टेल मी वन थिंग. Are objects, when we talk in programming term, we mean tangible things, the things that can occupy space? Shuttle is right, class is a blueprint of an object, but okay, that's okay. But what I want is, I want to know, do you think that object is something which occupies space in the universe, right? Does, okay, no. Dharmendra is saying no. Okay, Shubham is saying yes, right? That's quite interesting. KJ World is saying yes. Everyone is saying yes. Object is something which occupies space in the universe, right? उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है. तो मैं आपकी डेफिनेशन को आज थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन आपके लिए, लाइक वन मोर क्वेश्चन फॉर यू ऑल, ठीक है, विच इज माय फेवरेट क्वेश्चन. आई डू आस्क इन इंटरव्यूज एंड आई कैन टेल यू, मैं आपको आंसर देने से पहले बता रहा हूं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गिव द रॉन्ग आंसर, ठीक है. नाउ माय आंसर, माय क्वेश्चन टू यू इज, give me the name of two objects in the room that you are sitting in currently.
Give me the name of two objects in the room that you are sitting in. Chandrasekhar, Devashish, chair and table. Kevin has given us a chair and table, right? Others, PC and chair. Pen, charger, fan, chair, laptop, mouse, table. Okay. Sujan has given me and you, right? I'm not sitting in the room, your room, right? I'm here. But yes, Rupesh, your answer is correct. Exactly. Chair and coffee glass. ठीक है, that's fine. Rupesh, yes, I got your answer. I got your answer. Okay. Notebook and laptop. ठीक है. चले चले. एक और क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए फिर से जब जब वो गलत वेन एवर द इंटरव्यू गिव्स द रॉन्ग आंसर. अब सेकंड क्वेश्चन जो मैं उससे पूछता हूं दैट इज दैट इज name two classes in the room that you are sitting in. चलिए. Give me the name of two classes that you are sitting in the room that you are sitting in. Type class first so that may I know that you are talking about class, right? You are not talking about objects. So type class and then name the two classes. Laptop, mobile, empty book with pages. Okay. Okay. Room. You need to give me the name of two classes. Class, furniture, instrument. Okay. Furniture and instrument, right? Okay. Akash is given fan, LED bulb, door, window. ठीक है. Aryan is saying animal and materials. That's cool. That's cool. ठीक है, ठीक है. I got an idea, right? I got an idea. Can you differentiate, like जो आप नाम ले रहे हो, ठीक है? When you are taking the name of these objects, right? वही objects के नाम आप ले रहे हो और वही classes के नाम आप ले रहे हो, ठीक है? Shashidhar is saying space, right? Electronic device class and build is an object. Building is an object. Okay. Okay. चले मैं आपकी डेफिनेशंस को थोड़ा सा रिफाइन करूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा, राइट? एंड लेट मी टेल यू द रूम यू आर सिटिंग इन, द टेबल इज अ क्लास, चेयर इज अ क्लास, राइट? एंड द लैपटॉप इज अ क्लास. ठीक है, जितनी भी चीजें आपने लिए ना, एवरीथिंग इज अ क्लास, राइट? बट योर लैपटॉप इज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, विच इज सम डेल मैक बिल्ड क्वालिटी दिस सीरियल नंबर, द सीरियल नंबर, बट लैपटॉप इज अ क्लास. ठीक है, बिकॉज यू कैन हैव मेनी लैपटॉप्स, राइट, ऑफ सेम टाइप, but they have different IDs, they have different serial numbers, right? So laptop is a class, but the laptop that you are holding, which has certain serial number, okay, which has certain marks of yours, okay, that is an object. Okay. Someone said, right, you and me and you are objects, but person, human, these are classes, right? We are human, we are mentors, we are students, like these are classes. So yes, class is a set of some objects, right, we can say, or is a category जिसको मैं बोल सकता हूँ. तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूँ. ठीक है, छोटा सा एग्जांपल. सपोज देयर इज अ बैंक, राइट, रियल बैंक, और बैंक में यू गो देयर. ठीक है, जब आप बैंक में जाते हो, when you go to the bank, what all things you see? You can see certain employees, you can see computers on which the employees are working, okay? And you can see certain customers roaming around.
Now यू हैव टू विजुअलाइज दिस बैंक. आप सोचो कि ये बैंक जो है ना, ये विजुअल वर्ल्ड में कैसी होगी. इसके लिए अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, इसको अपने सॉफ्टवेयर में बनाऊंगा, देन हाउ दिस बैंक विल लुक लाइक. डज आई नीड टू हैव एम्प्लॉइज इन माई सॉफ्टवेयर? यस. डज आई नीड टू हैव कस्टमर्स? यस. डज आई नीड टू हैव दोज कंप्यूटर्स इन माई सॉफ्टवेयर? नो. नो, एग्जैक्टली नो. द रीजन फॉर दैट इज The reason for that is because why the bank employees are using those computers. ठीक है, क्यों उन computers को यूज कर रहे हैं? Why they are using it? They are using those computers so that they can update your bank accounts. Right? Why the employee is using the computer? To update your bank accounts. So bank account can be an entity that will exist in your software world, right? जो आप बैंक बनाओगे अपने सॉफ्टवेयर में, the bank accounts will be there. ठीक है? And bank accounts will exist, right? I might have a bank account, you might have a bank account, everyone will have a different bank account with a different account number. ठीक है? Customer will have customer IDs, employee will have employee IDs, but we also have accounts, right? So you can see when you will create a software for it, you will create a program for it, right? What are the objects? Objects are the one which will occupy space in memory, right? इस चीज को समझेगा. Objects will occupy space in memory, not in universe, right? Universe से तो मैप करते हैं उनको, ठीक है? Your objects will occupy. When I talk in programming terms, right? When we talk in programming terms, we say that the things that occupy space in the memory are the objects, and objects occupy space in the memory, classes don't. ठीक है? Classes से हम objects बनाते हैं. जैसे मैं एक example आपको बताता हूं. What happens is, you might have visited the societies, right? तो सोसाइटी में क्या होता है? सारे हाउस एक जैसे होते हैं. All the houses are similar in a society. ठीक? Now what happens? How the similar houses are built. तो contractor actually has a map, ठीक है? And that map is a class, that is a blueprint, जो हम बोलते हैं, जिसको blueprint बोलते हैं. But with the help of map, which contains the specification कि इस house की height कितनी होनी चाहिए, front कितना होना चाहिए, gate कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है? First floor कितना height पे होना चाहिए. That all things are written on that map, right? That map contains information, and we can use those map to build the houses. And one map can be used to build several houses, right? एक map से मैं कितने भी घर बना सकता हूं उसी के specifications के थ्रू. तो similar concept is there in program. तो यहां पर map को मैं क्या बोलूंगा? It is a class. ठीक है? और उससे जो मैं actual जो घर बनाए हैं, they are, so every house has some house number, right? They have their unique identities, but the map does not have identity, right? Map does not occupy space, right? Map में जो घर है, it does not occupy any space in this universe. ठीक है? It's a blueprint. तो we understood one thing, right? पहले वाले केस में we saw that the objects could be the employees, objects could be the customers, objects could be the bank accounts. So from here, if I need to give the definition, of object, it could be any real world entity that could have a physical or conceptual existence, right? तो पहली चीज जो आज हमें समझनी है वो ये कि objects could be physical as well as conceptual when I'm talking in programming terms. ठीक है? I hope this is clear. ठीक है? So you got this, right? Objects can have physical as well as conceptual existence. You can have tangible as well as intangible objects, but they will occupy space. They will occupy space in the memory when you are writing programs for them. ठीक है? I hope that's clear, right? That's clear. इसके आगे बढ़ते हैं. देखो, what we are about to do today is, मैं आपको बता देता हूं कि we all have seen, right, कि we have to learn by doing something, right? So what we will do is, we will learn by building something. ठीक है? हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, क्लास की डेफिनेशन, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू दोस डेफिनेशंस, राइट? वी विल डायरेक्टली वर्क ऑन द प्रोडक्ट, ठीक? एंड देन वी विल
we refining our definitions. ठीक है, उसके साथ साथ we will be learning concepts. I hope that will help. If you are ready to go ahead, please give me +1. Please type +1 in the chat box so that I may get the go ahead and can proceed with the building up of our application, which is my Flipkart. Yes, it is inspired from Flipkart, and color combinations are also being stolen, but yes, it is going to be like that. Thanks everyone. Thank you guys. Thank you. ठीक है, चलिए. When we appear for interviews, अब देखिए हम धीरे धीरे बात भी करेंगे और आगे थोड़ा थोड़ा सीखेंगे भी. ठीक है. So when we need to do object oriented analysis, right? When we need to do object oriented analysis, these are the 5 steps when I want to convert my ideas into a project, right? I want to convert my ideas into an executable thing. Okay. Now, what happens is we have to gather requirements. So this is a normal problem solving process. You see, gather requirements, create diagrams, and then write the code. So this is like we are creating 2 types of diagrams over here. If you can see, we are creating use case diagrams. We are creating class diagrams. Now, first questions come that generally one question that comes to my mind is there is a concept of high level designs and low level designs, right? Can you tell me the difference between high level designs and low level designs? What could be a high level design according to you, and what could be a low level design? Yes, guys. Have you heard like when we learn this thing, right? When we learn this thing, object oriented analysis. So there is a concept called high level designs and low level designs. So high level design concerns the behavior of the app. High level hardware perspective, high level broader picture. ठीक है. Low level design is object oriented design. Okay. So okay, Durga Prasad is there. Durga Prasad has said low level design is object oriented design. So let me tell you. ठीक है, थोड़ा सा प्रमोशन भी कर लेता हूं अपना. ठीक है. So we have one course. मैं आपको this would be an idea. ठीक है. So if you want to learn object oriented design thing, we have a course with the name Low Level Design for SG1, right? And this course will actually help you to learn these things, object oriented analysis and design thing, how we do, and it has several case studies, right? So it has around 17 to 18 case studies, like how you will think of these ideas while creating those projects, right? ठीक है, तो मैं कुछ डेफिनेशंस पढ़ता हूं यहां पर हाई लेवल डिजाइन एंड लो लेवल डिजाइन का. लो लेवल डिजाइन दिस इज बेसिक डिजाइन. ठीक है. ओके. इन हाई लेवल डिजाइन प्रोजेक्ट इन रियल मार्केट. ओके. Black box versus white box. High level full project development. High level design is a class, low level design is an object. Okay, that's all right. थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत है. देखिए, जब मैं बोलता हूं हाई लेवल डिजाइन, ठीक है, एंड लो लेवल डिजाइन, इट मींस हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. आप समझेगा इस चीज को. हाई लेवल डिजाइन मींस हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन and low level design means low level of abstraction. Now the question comes, what is an abstraction? When I say high level design has high level of abstraction and low level design has low level of abstraction, now new term comes to us, right? And which is most prominent, which is the first property of what we say object oriented analysis. Like we have 4 properties. We know abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. So when I say high level designs, it means they have high level of abstraction, and low level design means low level of abstractions. What is an abstraction according to you people? And what is high level abstraction? What will be low level abstraction? Abstraction is an OOPS property. That's quite correct, right? There. Okay, representing entities in the app as classes. Are you saying, ठीक है?
Shashikant has that bookish definition, which is hiding unnecessary details, hiding complexities, right? And like मैं भी जब बड़ा हुआ ना यार, मैं भी यही definition के साथ बड़ा हुआ, hiding complexities and showing essential details, ठीक है? लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हाई लेवल डिजाइन की अगर मैं बात करता हूँ, तो हाई लेवल डिजाइन could be something, it could be something which is like, जैसे मेरे को एक फेस ड्रॉ करना है, ठीक है? एंड आई ड्रॉ अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, ठीक है? एंड I don't know, right? It could give me an idea like what this image could be. ठीक है? So all the information is like hidden. It does not contain much information. But if I draw something like this, it could be a cap, right? When I figure this out, it could be a cap with certain marks on it. ठीक है? So these are two designs, right? We have created. One contains very less information. ठीक है? And another one contains more information, or we can say here the informations are less. This contains less information about the product, and this contains more information about the products. ठीक है? And when I say less information, that means it is higher abstraction. Higher abstraction means more informations are being hidden. ठीक है? तो it has higher abstraction. Writing थोड़ा सा गंदा आ रहा है because of certain like this table. ठीक है? Higher abstraction, and this is lower abstraction. Low abstraction. तो आप समझिएगा, when I say high level design, it means it has very less information. When I say low level design, it has low abstraction. That means it has more information about the product. ठीक है? तो अब जनरली क्या होता है कि we need more information so that we can create code out of it. जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे डिजाइन में है, उतना ही अच्छा मैं कोड बना पाऊंगा. अगर इंफॉर्मेशन कम होगी तो मैं कोड नहीं बना पाऊंगा. ठीक है? तो we have the different types of diagrams. UML, you all might have heard of, Unified Modeling Language. It gives me certain amounts of diagrams, जिसमें कुछ हाई लेवल डायग्राम्स होते हैं, कुछ लो लेवल डायग्राम्स होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल डायग्राम्स होते हैं, कुछ बिहेवियरल डायग्राम्स होते हैं. ठीक है? तो ये कुछ डायग्राम्स है क्लास डायग्राम्स. क्लास डायग्राम्स आर लो लेवल डायग्राम्स. ठीक है? एंड यूज केस डायग्राम्स आर सर्टेन हाई लेवल डायग्राम्स. राइट? तो अब क्या होता है, जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, सोचिए कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आया, तो यू वोंट स्टार्ट क्रिएटिंग लो लेवल डिजाइन्स फॉर इट. What will happen? You need to share your ideas with others, stakeholders. So you will create high level designs for it. High level design means which will just tell the mota functionality of it, right? But it won't contain the basic details of it. ठीक है? तो जनरली क्या होगा, जब भी हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट्स हम इकट्ठा करते हैं, वी कलेक्ट सम रिक्वायरमेंट्स. ठीक है? वी क्रिएट अ हाई लेवल डिजाइन फर्स्ट. ठीक? So that it could be understood by non-technical people as well. ठीक है? Others could give their input and we can refine our requirements. Right? So whenever you have certain ideas, what you will do? You will create the use case diagrams for it. Use case diagrams कैसे बनाते हैं, क्या करेंगे, वो भी हम सीखेंगे. अपनी e-commerce application के लिए we will learn. We will see how do we create use case diagrams. Then those use case diagrams are of very less use for the coders or the implementation. ठीक है? So what do we need? We need some low level designs. Low level designs means it contains more information about the product. ठीक है? We need low level designs, and when we need low level designs, these low level designs are used by, तो low level design के लिए हम क्या करते हैं? We create class diagrams so that the code can be directly created out of them. ठीक है? And when we write the skeleton code, we write the structure of the code. After that, we write the complete implemented code over there. ठीक है? तो प्रोसेस समझ में आया कि कैसे हम फॉलो करते हैं. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देखिए प्रोसेस यही रहता है. Process, this is normal problem solving process. Wherever you will see, you will find this process, right? But how we do, like these use case diagrams are something which are object oriented. ठीक है? Class diagrams are object oriented, right?
So when we do object-oriented analysis, we are creating use case diagrams for high-level designs, right? And we are create class diagrams for low-level designs, right? I hope you got this. If you got this idea why we are following these steps, if you got this, please type +1 so that I can proceed, right? Please type +1 and I want your permission to proceed. Okay. Thank you guys. Thank you very much. Now we will see what are like how the requirements will be gathered in a e-commerce application. तो अगर मेरे को एक e-commerce application बनाना है, how will take the requirements, right? So see, this e-commerce application first requirement would be the sellers will register their products on my Flipkart product catalog. So I will have a product catalog and sellers will be able to register their products. This would be the first requirement of any application that I'm developing for e-commerce, right? Sellers will be able to register their products, right? So I should be providing, this is my first requirement. I've noted it down. Then we have second requirement, listing of products on my Flipkart product catalog. So I should have a listing of products on my app, right? So when I am creating certain app, there should be a list of products. कौन से products different sellers जो offer कर रहे हैं, it should be there on my app, right? After that, the customers will be able to search for the products. तो जब मैं app बनाऊं, the customers should be able to search the products on my app, right? तो search functionality should be there, ठीक है? And the fourth thing that comes is customers can add the items to their cart, right? This should be there. These all are the requirements which must be fulfilled by the app that I would be creating, right? तो customers क्या कर सकते हैं when they want to purchase the products? They first have to add the items to the cart. जनरली क्या होता है, why do we want this cart? मैं कभी भी एक प्रोडक्ट को अलाउ नहीं करूंगा कि जाकर के एक प्रोडक्ट खरीद लो. Customer might want to buy multiple products, right? So what I need to do is I need to allow him to add all the items to the cart, ठीक है? And then only we will let him check out. So there is something. Customer will place the order. Like a customer will add items to his or her cart, right? तो कस्टमर्स विल ऐड आइटम. अब हम आइटम को समझते हैं, व्हाट इज एन आइटम, ठीक है? अभी हमने प्रोडक्ट्स की बात किया था, तो कस्टमर डोंट ऐड प्रोडक्ट टू द कार्ट, कस्टमर विल ऐड आइटम टू द कार्ट. एंड आइटम इज अ न्यू टर्म व्हिच इज लाइक प्रोडक्ट प्लस क्वांटिटी विल क्रिएट एन आइटम, ठीक है? सो customers will add, so yes it is Nagini, it would be adding and removing, right? Both way should be there, ठीक है? तो customers will be able to add items to their cart. An item is one entity which consists of a product and a quantity. So customers don't add product to their cart, they add items, where item is a combination of product as well as the quantity, right? Now when customer has done purchasing, ठीक, तो एक और आइटम का एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूं, ठीक है? आइटम हियर, दिस इज वन आइटम एंड दिस इज सेकेंड आइटम, ठीक है? तो आइटम वन इज वन कैमरा, आइटम टू इज टू टी शर्ट्स, ठीक? एंड यू कैन सी देयर आर टू आइटम्स इन द कार्ट ऑफ द यूजर, ठीक? देन कस्टमर्स विल चेक आउट और प्लेस द ऑर्डर. तो कस्टमर्स क्या कर सकता है? कस्टमर कैन डिसाइड टू चेक आउट, ठीक है? व्हेन he has done the shopping, he has added item to the carts, it should be allowed to check out, right? And then my Flipkart will generate the shipment for this customer, ठीक है? For this order. तो अब क्या होना चाहिए? जब customer has done the purchasing, there should be some shipment created, right? Shipment created from the app side. तो ऐप क्या करेगा? ऐप विल क्रिएट अ शिपमेंट कि हाँ ये आपका अराइवल, एस्टिमेटेड अराइवल डेट है, ठीक है? आपका करंट स्टेटस क्या है? तो यू कैन ट्रैक योर शिपमेंट एक्चुअली, एंड शिपमेंट कंसिस्ट ऑफ
the order, what order, which order ID is there, right? So we have these set of requirements. So generally what happens when you collect the requirements from the customers, right? It might be possible that all the things are not there, that these requirements might not be sufficient, right? These requirements might not be sufficient to start building the product. Okay, there. So what we need to do, we need to make certain assumptions in that case. तो हमें क्या करना पड़ता है, जब आप किसी प्रोडक्ट को लिए कुछ रिक्वायरमेंट जब हम गैदर करते हैं मार्केट से, तो जनरली वी कैन नॉट स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज रिक्वायरमेंट्स. व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कलेक्ट, वी नीड टू assume some things. So our assumptions could be sellers can add update their products, so sellers will register their, like seller will register, ठीक है, and they should be provided the functionality to update their products info as well, ठीक है, so that they can update the prices, descriptions, title of the products that they have added to the cart, ठीक है. Then there will be categories of the products, ठीक है. तो when I will show the products on my site, I will be showing them on the basis of different categories, right? The products will be classified into categories, ठीक. And customers should be able to track their shipments, right? So I should be providing the functionality where customers can track the shipments, that what is the current status of my order. Then customers will have the booking history. Booking history is very, very important, right? So whenever we are building any app, okay, which is like where we allow the customers to book something, we need to provide this functionality. Okay, we need to have this booking history. Can anyone tell me, right, why booking history is important, right? Why booking history is important? Yes, Kaushik, you are absolutely right. We need to have inventory management so that we can track the product availability. But the thing is, here we are talking about the app which allows the seller to sell their products, right? So sellers will have to maintain this thing, right? Whether the product is out of stock or not. So we can just provide them that what is the available quantity and like what is the current available quantity with them, and we can take use of that as well. Okay, booking history is important so that we can place some product again or to cancel previous orders or something. Exactly. अगर बुकिंग हिस्ट्री नहीं होगा तो यूजर्स वोंट बी एबल टू कैंसिल देयर प्रोडक्ट्स, राइट? तो मैंने क्या किया, कैंसिल, अभी अगर प्रीवियस ऑर्डर्स जो पहले प्लेस किए हुए हैं उसमें से किसी कुछ प्रोडक्ट्स को कैंसिल करना है, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. अगर मैं करंट ऑर्डर सिर्फ मेंटेन कर रहा हूं, आई एम नॉट मेंटेनिंग द हिस्ट्री, राइट? तो यूजर विल नॉट बी एबल टू कैंसिल देयर प्रीवियस प्रोडक्ट्स, ठीक है. देन yes, exactly, right? For tracking the orders, yes. Okay, so after that we need to assume one more thing, right? User can either be a customer or a seller. So we can have two types of users, right, on our site. So we can have a user which is like customer as well as seller. So we can classify our users and we can further classify the customer into registered and non-registered customer as well. So like generally what happens, anyone can search for the products, but when you want to place the orders, you have to be registered customer. Then only you would be able to place your products. ठीक है, तो अभी के लिए फॉर सिंप्लिसिटी वी आर रिमूविंग दिस थिंग, वी आर कंसिडरिंग ओनली टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, कस्टमर एंड सेलर, बट वी कैन मेंटेन दैट थिंग एज वेल, रजिस्टर्ड एज वेल एज गेस्ट यूजर्स, ठीक है. एंड देन the order can be in, when order can have various states, right? It could be a created state, it could be pending, shipped, unshipped, cancelled or completed. तो जो ऑर्डर है वो आपका ऑर्डर किसी भी स्टेट में हो सकता है. तो ऑर्डर की स्टेट्स वी हैव टू मेंटेन. हम यहाँ अज्यूम करके चल रहे हैं कि दीज स्टेट्स आर गोइंग टू बी क्रिएटेड, पेंडिंग, अनशिप्ड, शिप्ड, कैंसिल्ड एंड कंप्लीटेड, राइट? सो व्हाट वी हैव डन इज these are order status, like what order status is going to be, ठीक है. And here we are assuming. So see, what we have done is we have gathered the requirements, right? And we have assumed, made certain assumptions, ठीक है.
and we have collected these points together. ठीक. Now what happens is these are our core points on which we will be working to develop our product. ठीक है. Later on we can decide, like we can decide if something new comes, we'll add that to our requirements and we'll make further changes to our product, but we'll have to follow this cycle. ठीक है. So, is this clear? Like gathering requirements, assumptions, does they make sense to you? Can we move to step 2? Please type step 2 if you are clear with step 1. आपको लगता है कि we can move to step 2. Share the product can be a requirement. Yes, exactly, Nagini. See, what we are doing is we are building a basic model, but your requirements can come and we can cater those requirements. Okay, that's fine. Thank you guys. Thank you very much. So second steps is generally creating a use case diagram. ठीक है. अब use case diagram बनाने के लिए ना, what we need, what all things do we need to create use case diagrams? ठीक है. चले, let's see different steps. So if you want to learn that, like here I am just developing, right? We are just creating these use case diagrams. I'll give you an idea, ठीक है? But if you again want some in detailed information about these कि कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है? तो you can go through different courses that we had. Like you can go through the courses of low level design, ठीक है? फिर से promotion कर रहा हूँ थोड़ा सा अपना, ठीक? You can go through that course and figure out the things over there. There we have described like पूरा की basic steps कैसे शुरू करते हैं, कैसे बनाते हैं. We have gone with that thing. ठीक है. तो when you draw use case diagrams, right, you have to follow these steps. So when you will follow these steps one by one, your use case diagram is going to be a perfect use case diagram. ठीक. तो सबसे पहले हम बात करते हैं identification of actors की. How do you identify, ठीक है, how do you identify the actors, right? You can get the link in the description, right? You can get the link in the description. So guys, what are actors according to you? Like when we are talking about use case diagrams, थोड़ा सा आपका concepts को भी revise करते हैं, ठीक है? जो concepts आपने भी पढ़े हुए हैं, और अगर आपने नहीं पढ़े हुए तो थोड़ा सा try करते हैं ना, hit and try करके कोशिश करते हैं. What could be actors according to you? Yes, guys, let's make it interactive. Let's make it two-way. It is not going to be one-way. I can assure you this. ठीक है, आप भी बताते रहिए, मैं भी बातें करते रहेंगे, ठीक? And धीरे-धीरे we will be building up the product. Okay, so users, customers, ठीक है, who use objects actually. Shubham, great, ठीक? Okay, main role in all the stakeholders. No, users. Quite correct. Objects and classes, like quite correct, right? Okay. Users of our application. Actually, Pankaj has given an answer. Okay. So whatever application we have done, right? And the things or the objects that are interacting with that application, they will be classified as actors, right? So what we do when we have to draw a use case diagram, the first step is always to draw this box, right? This rectangular box. तो सबसे पहले हम rectangular box draw करते हैं, फिर अपनी ऐप का या अपने सिस्टम का नाम टॉप पर लिखते हैं, ठीक है? This is how we draw the use case diagram. ठीक. अब सबसे पहला स्टेप जो आता है, which is like identification of actors. How do we identify the actors? इसके लिए all of you have given like quite correct answers, ठीक? Identification of actors. अब actors को identify अगर मुझे करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? I'll go to my requirements. मैं उस पेज पर फिर से गया, अपने पेज जो मैंने requirements नोट डाउन कर रखी थी, ठीक है? And then we will read these requirements, right? And we will see who are the objects that are interacting with my system. Like whether they are giving some inputs or taking some outputs or generating something. So if you will figure out this thing, right? We have seller will be registering products. So seller products को register कर रहा होगा app पर, ठीक है? Customers will see the list of products.
Customer will be able to search for the products. Customers will add or delete items to the cart. Okay? Customers will place the order. System will generate the shipments, right? System is there. Then we have sellers, customers, and customers. So if you'll see these things, right? जनरली आप क्या देखोगे यहां पर देयर वी हैव सेलर्स वी हैव कस्टमर्स एंड वी हैव सिस्टम विच इज जनरेटिंग सम शिपमेंट्स राइट तो सिस्टम इज जनरेटिंग सम शिपमेंट्स तो हम क्या करते हैं अपने एक्टर्स को इस नोटेशन के साथ यहां पर मार्क करते हैं तो वी हैव कस्टमर्स वी हैव सेलर्स एंड वी हैव सिस्टम ठीक है ओके नाउ there is a concept of primary actors and secondary actors ठीक है तो if you learn how to draw use case diagrams we have seen that the primary actors are the actors which interact with the system or which initiate the actions right but whereas the secondary actors respond to certain actions तो यहां पर we have seen the customers and sellers are going to initiate the actions on my this app whereas the system will respond to the actions so someone has placed the order it will generate the shipment right so we are not considering Lalit payment gateway over here okay payment gateway comes actually like a third party integration so we can consider it right if you want payment gateway so we can have payment service provider which will take the information and will revert us like will come back to us with certain the status of the payment like the transaction राइट तो हमने क्या किया हमने एक्टर्स को फिगर आउट किया और एक्टर्स को फिगर आउट करने के बाद उनको नोट किया नाउ यू नीड टू नोट वन थिंग राइट व्हेन यू ड्रॉ यूज केस डायग्राम्स primary actors are kept on the left hand side because there is no symbolic difference in primary actors and secondary actors right but the primary actors will be on the left hand side and the secondary actors are on the right hand side of the system don't worry there we will be like I will discuss you how to integrate those payment things ठीक है उस पर हम बात कर लेंगे मीनवाइल ना आप एक कोशिश करिए कि there is a form right AMA ask me anything you can put your queries over there तो अपनी queries questions you can put over there and we will try to answer your queries in the last ठीक है उस पर हम काम करेंगे but what you need to do is उस पर आप उस फॉर्म में अपनी अगर कोई क्वेरी है उस पर डाल दो तो धैर्य आप उस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए I'll respond like I'll reply your queries at the last कि कैसे पेमेंट गेटवे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उस पर भी हम बात कर लेंगे ठीक है आई होप दैट विल हेल्प धैर्य चले तो बाकी हम बात करते हैं अभी हम बात कर रहे थे प्राइमरी एक्टर्स एंड सेकेंडरी एक्टर्स एंड देयर इज नो सिंबॉलिक डिफरेंस तो हम क्या करते हैं प्राइमरी एक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं लेफ्ट साइड पे और जो सेकेंडरी एक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं राइट साइड पर अब देखिए अब हमें क्या बनाना है यूज केसेस फिगर आउट करने हैं तो व्हाट विल डू सेकेंड स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूज केसेस and when we need to identify use cases we'll again go back to our requirements right and these were our requirements where we figured out the actors right अब मुझे क्या करना है इसमें वो सारे वर्ब्स निकालने हैं जो ये जिन एक्शन से इंटरेक्ट कर रहा है तो ऐसे एक्शंस निकालने हैं जो ये हमारे एक्टर्स थे जो परफॉर्म कर रहे हैं सिस्टम के साथ तो सेलर्स विल रजिस्टर प्रोडक्ट्स कस्टमर्स विल सर्च द प्रोडक्ट्स ठीक है customers will add item to the cart customer will place the orders system will generate the shipments and seller will update the product info customer track his or her shipment ठीक तो देखिए now for every verb over there ठीक है we will create a use case register product update product generate shipment track shipment add item to the cart search product place order ठीक अब देखिए now what happens is कुछ हमें assume किया हुआ जैसे नॉर्मल कोई ऐप आप बनाते हैं तो we have to give these functionalities right we have to give these use cases right login and register so we need to like जब ऐप बनाओगे तो ये यूज केसेस रहेंगे जो जनरली सब फॉलो करेंगे ठीक है तो ये भी हमने यूज केस बना दिया लॉगिन का
रजिस्टर का, और उसके बाद जो है ये जो नॉर्मल यूज केसेस जो इंटरेक्शन थे वो तो हमने बनाया है। आफ्टर दैट इफ विल सी वी नीड टू ऐड एसोसिएशंस। अब किस यूज केसेस से कौन सा एक्टर्स जो है कनेक्ट कर रहा था वो एसोसिएशंस हमें वहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो कस्टमर्स वर सर्चिंग प्रोडक्ट, प्लेस ऑर्डर्स, लॉग इन, रजिस्टर, ठीक है, कस्टमर्स विल ऐड आइटम टू द कार्ट, ठीक, and customers will track shipments. So this is how the customers are interacting. After that, we have sellers, right? Sellers can log in, register, like they can do. They can register their products, they can update their products. तो हमने उसको भी associate कर दिया sellers के साथ. And system will generate shipments. तो system is associated with generate shipment use case. तो हमने क्या किया, सारे यूज केसेस निकाले। यूज केसेस निकालने के बाद कस्टमर, सेलर और सिस्टम जो एक्टर्स थे वो किस किस यूज केस के साथ एसोसिएट कर रहे थे, वी हैव डन दिस थिंग। So Lalit is saying, do we have assumption that listed products are available for sale? Yes, we are assuming that yes, whatever we can see, you can buy that product, right? It's not like we are not assuming that the status of the product, right? We have considered the status of the order actually. So this could be like this could be extended further to maintain the status of the product as well. Okay? So as we are maintaining the status of order, we can maintain the status of the products. And as the product goes out of scope, you can mark the status as inactive, yeah, out of stock. I hope that answered your query, Lalit. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एडिंग इंक्लूसिव यूज केसेस की। ठीक है, तो इंक्लूसिव यूज केसेस कौन से होते हैं आपने देखा होगा, देयर इज वन यूज केस which we want to be successful on the completion of another use case. तो अगर मैं बोलता हूं कि ये चीज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, वो मैं तब बोल रहा हूं कि वो किसी और पर भी डिपेंड कर रही है, तो ऐसे यूज केसेस को हम बोलते हैं इंक्लूसिव यूज केस। तो अगर आप यहां देखो प्लेसिंग एंड ऑर्डर, ठीक है, प्लेस ऑर्डर डिपेंड्स ऑन एडिंग आइटम टू द कार्ट। ठीक है, तो यूजर कैन प्लेस ऑर्डर व्हेन ही हैज एडेड द आइटम टू द कार्ट, otherwise he cannot place order, right? तो place order depends on adding item to the cart। तो मैंने इस use case को कैसे define किया है, we have made it a inclusive use case for place order use case। तो आपने ये notations देखे होंगे, इस तरीके के notations you might have seen, but what we'll do, how do we represent those inclusive use cases? तो क्या करता हूं मैं, एक dash arrow के साथ, और parent से child पर जाता है, जो जिसके ऊपर dependent है उसके ऊपर जाएगा, ठीक है, एंड वी मार्क दोस टैग्स एंड वी राइट इंक्लूड ओवर देयर। ठीक है, और कौन सा जो वो है इंक्लूसिव यूज केस है, व्हेन यूजर सेलर इज रजिस्टरिंग प्रोडक्ट, तो आई वांट हिम टू सेलेक्ट द कैटेगरी। ऐसा ना हो कि अनसेलेक्टेड नॉन कैटेगरी प्रोडक्ट्स ऐड हो जाए। तो व्हाट डू आई वांट इज व्हेन द यूजर सेलेक्ट the register, this is one assumption that we missed actually, ठीक है, but this would have been there in our assumption and would have been a use case, and that would be an inclusive use case for registering a product. ठीक, I hope this is clear. The inclusive use cases, right? So how do we create inclusive use cases? अगर एक यूज केस दूसरे यूज केस पर डिपेंड है, राइट, आई वांट टू मेक इट डिपेंडेंट ऑन अदर यूज केस, कि जब वो कंप्लीट हो तभी ये वाला कंप्लीट होना माना जाएगा। जैसे रजिस्टरिंग अ प्रोडक्ट विल बी डन व्हेन यूजर हैज सेलेक्टेड द कैटेगरी, ठीक है, अदरवाइज वी वोंट कंसीडर द रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, राइट। तो हमने क्या किया, इंक्लूसिव यूज केसेस भी ऐड कर लिया। ठीक, नाउ we had to adding of extension use cases। तो extension use cases की अगर मैं बात करूं, extension use cases are generally use cases कि when we have a use case, right, and we write it as extends, जैसे करके लिखते हैं हम उसको, ठीक है। extension use cases जब होते हैं when some use case might lead to some other use case as well, ठीक है। here we don't have any example of that, that's why we'll skip that portion। तो generally you won't find extension use cases हर जगह possible नहीं हो, but you can see this when we log in we might be showing error message, right? We need to show error message when user has given incorrect login credentials, ठीक है। तो this could be one extension case। sometimes the error message might be shown when the user is trying to log in, right, but we are not considering to make it simpler,
ठीक है. Then comes adding inheritance. So inheritance comes amongst the actors only, right? So what we can do? Yes, Kaushik, you are absolutely right. Validations could be the examples of extensions. ठीक है. और उसके बाद अब देखो हम बात करते हैं तो जो हम देखते हैं we had one assumption user is either customer or seller. तो we can have a user over here. ठीक है. And user we can have two actors which are inheriting the properties from user. So we can have inheritance among the actors where user is the main actor. ठीक है. User is the main user is there. ठीक है. Then we have two types of users which are customer and seller. तो मैंने यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया. Now there are use cases which might fall for user. ठीक है. तो if I see login and register, these are applicable for everyone, right? Every user has to do it. They have to log in, they have to register. So instead of showing them from customer and seller, we can show them with the user because these are applicable for both. So generally we'll see you have use cases which have association from multiple customers. You might have abstraction, like you might have inheritance among the actors, right? So we have removed that multiple use cases for single object, single for like multiple actors for single use case. Okay? And this is our final use case diagram. Okay? Okay, user is the base class and customer and seller is subclass. Am I understanding? Lalit, you are absolutely correct, right? And user will be a abstract class also here. Let me tell you. User will be an abstract class. There is no user kind of thing. There will be a user which is going to be either seller or a customer. No user will exist for my app, right? So I will create my user as an abstract class. We'll see it. We'll see it, right? We'll see it. Is this clear to you all, right? मतलब ये समझ में आता है क्या ये use case diagram? Does this make sense to you? As per our requirements, all the requirements that we have gathered, this is how we create use case diagrams, right? Okay, so I hope अभी तक आपको clear हो गया होगा कि what are the steps that are needed to create use case diagrams और किस तरीके से आपको follow करना है. तो requirements gather किया, उसके बाद आपके पास procedure है. मतलब simple मैंने आपको बताया कि identification of actors, then identification of use cases, then adding associations, then you adding those inclusive use cases, identifying those extension cases, and then identifying inheritance or adding inheritance in your use case diagram. And you will land up with a complete use case diagram for your product that you are building. And you can follow it for any product, let me tell you. Okay. Thanks Maruti, thanks very much. अब आता है तीसरा स्टेप, राइट, द थर्ड स्टेप, which is creation of class diagrams, right? We need to understand this thing because creation of class diagrams, जैसे मैंने बोला, it is a low level diagram. Low level means low level of abstraction, high level of thinking, right? High level of details. And when it comes it comes to high level of details, it becomes confused. It starts getting confusing, right? And we have to understand all the things in this, right? Class diagram. तो class diagram is another a structural diagram. मैं आपको बता दूं UML का एक type है diagram का which depicts, right, how the systems or how the classes, how different classes in my project will interact with each other. ठीक है. तो क्लास डायग्राम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आपको सबको पता ही है. मैं आपको बताता हूं कि आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, राइट, कि क्लास डायग्राम में 3 बॉक्सेस बनाते हैं, उसमें ऊपर नाम लिखेंगे, देन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोस थिंग्स, राइट, दैट यू ऑल माइट गेट. लेकिन आपके पास यूज केस डायग्राम है, आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनसे हमें हाउ डू वी प्रोसीड विद क्रिएटिंग क्लास डायग्राम्स, उस पर बात करते हैं. तो द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्लास डायग्राम जब बनाने हैं तो अपने रिक्वायरमेंट्स में जब आप जाओगे तो यू नीड टू फिगर आउट डिफरेंट नाउन्स. कौन कौन से नाउन्स मैंने यूज किए हैं?
ठीक है। तो कौन कौन से क्लास डायग्राम, मतलब कौन कौन से नाउन्स मैंने यूज किए अपने रिक्वायरमेंट्स में, हम उन पर बात करते हैं। ठीक, तो अब देखिए, दीज वर माई रिक्वायरमेंट्स, राइट। अब मैंने अगर इसमें देखना है सेलर विल बी रजिस्टरिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब नाउन्स अगर मैं टैग करता हूं, नाउन्स को देखो, तो most of the nouns which I have tagged is seller, products, product catalog, customer, products. Then again product catalog is there, customer is there, products is there, ठीक है, items is there, cart is there, order, system is there, shipment is there, right? Okay. So what we do is we collect these nouns together with us. तो मैंने क्या किया, सारे nouns जो भी मेरे निकले requirements में से, उनको मैंने अपने पास रख लिया। ठीक है, now we'll go for assumptions, right? These were my assumptions. I'll tag nouns in this also. ठीक है, तो बाकी सारे nouns मैंने tag किए, and I've added the additional nouns जो मेरे पास जो अलग से आए, उनको भी मैंने अपने यहां पर add कर लिया, right? Is this clear? ठीक है, तो अगर आपको क्लास डायग्राम्स बनाने हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स अजम्पशंस में जाना है, यू हैव टू गो देयर एंड यू नीड टू फिगर आउट डिफरेंट नाउन्स, और वो नाउन्स कौन कौन से होने वाले हैं उनको हम पिक करेंगे, और पिक करने के बाद उनको कलेक्ट कर लेंगे। नाउ व्हाट वी डू इज वी अरेंज देम, जितने भी नाउन्स मेरे पास आए उन सबको मैं अरेंज करता हूं। ठीक है, तो जितने नाउन से सेलर था, मेरे पास प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट कैटलॉग था, कस्टमर था, सिस्टम आई हैड, ऑर्डर आई हैव, कार्ट, आइटम, ऑर्डर स्टेटस, यूजर, कैटेगरी, शिपमेंट, दीज ऑल वर द नाउन्स दैट आई कलेक्टेड, और इनको मैं अपने पास रख लेता हूं। ठीक है, अभी इनकी क्या क्या, अब देखिए, व्हेन आई टॉक अबाउट क्लास डायग्राम्स, दे नीड टू हैव एट्रीब्यूट्स, दे नीड टू हैव मेथड्स। ठीक है, मेरे को पता है, आई नो दिस थिंग्स। तो हम इस पर बात करेंगे कि सेलर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, कस्टमर लाइक ये प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, व्हाट प्रॉपर्टीज विल द प्रोडक्ट हैव, वी नीड टू थिंक ऑफ दोस प्रॉपर्टीज। अभी स्टेप पे हम वो बात करते हैं। उसके बाद व्हाट वी डू इज वी अरेंज देम, लेट मी रीअरेंज देम सो दैट वी कैन ड्रॉ द एसोसिएशंस। अब देखिए, क्लास डायग्राम कंसिस्ट ऑफ द क्लास डायग्राम्स as well as the relationships between them. Now, can you tell me what are the different types of relationships between two classes, right? Anyone? कौन कौन सी relationships हम draw करते हैं, आपने देखी अपने क्लास डायग्राम्स में? Come on guys, come on, you all are engineers, you all have gone through this object oriented syllabus. ठीक है, what are different associations that could be there, right? What are different relationships? Okay, one to one has a parent child relationship, one to one. See, Shitija Patil, let me tell you, one to many are not the types of relationship. ठीक है, okay, one to many is not a type of relationship. These are cardinalities of the relationship. Okay, matlab most of you are going to user with seller customer. Adding items in the cart is same as adding product in the cart. Then why we are using item? Okay, Jyoti, you might have missed, right? You cannot add product to the cart. When you add something to your cart, you add the product as well as the quantity. So suppose you are adding two products, like you have to order 2 t-shirts. Okay, so there will not be 2 products. There will be one item, that is a t-shirt, and the quantity would be 2. Okay, so I hope Jyoti this would clear now. अगर आप देखोगे वीडियो को शुरू में, तो I have told you, right, we don't add products to the cart, right? We add items to the cart, and item is an entity which consists of a product and the quantity of the product. Okay. यार मतलब मेरे को लगता है ना कि most of you are going to fail your what should I say? Like if you are trying it, you don't know it, then it's quite good, right? It's good. ठीक है.
हैज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप, इज करेक्ट, राइट, बट वो आपको डीबीएमएस से याद आ रहा है, पता है आपको? ओके, चलिए चलिए आपकी बात रखते हैं और मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको। देयर इज अ हैजर, अब आप देखिएगा, एसोसिएशन इज देयर, एग्रीगेशन इज देयर। इफ यू क्वाइट गॉट इट तो कुछ टाइप कर दीजिएगा फटाफट से ना, अगर आपको लगता है एसोसिएशन, देन इनहेरिटेंस जिसे हम जनरलाइजेशन बोलते हैं, देन यूर एग्रीगेशन एंड देन यूर कॉम्पोजिशन। याद आ रहा है? Can you recall this thing? Aggregation, composition, association, and what else we had? We had generalization. ठीक है, तो exactly association, aggregation, composition, and generalization. We have four types of relationships when we talk about classes, right? बात करेंगे और बात करेंगे इसके बारे में। We'll talk, right? We'll talk. तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इनके बीच में एसोसिएशन ड्रॉ करना। There is no encapsulation is different thing. I'm talking about how two classes are related to each other, right? So when I'm talking about classes, so there could be four types of relationship. One is association, one is generalization, then we have aggregation, and when we have composition. अब उस सब पर बात करते हैं एक एक करके, ठीक है? देखिए, तो a system, this type of relationship is called, क्या बोलते हैं इसको? What is the type of this relationship? Tell me. क्या बोलते हैं हम इसको? चलिए, let me help you. Whether it's a aggregation or composition, tell me. Is it a aggregation or composition? मुरली, मतलब out of box, नहीं out of universe. Okay, one to many, right? One to many is quite correct, Akhilesh. But I'm talking about the type of relationship. It is composition. It is composition. ठीक है? How many of you got composition? Right? Composition कितने लोगों को समझ में आ गया था? ठीक है? This is composition. अभी मैं आपको बताऊंगा the difference between composition and aggregation. मतलब this is one of the mostly asked question in the interview, right? Mostly asked question in the interview. Composition एंड एग्रीगेशन का डिफरेंस बताने का, ठीक है? एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, मोस्टली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू इट रॉन्ग, राइट? डू इट रॉन्ग। तो इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है? कॉम्पोजिशन फिल डायमंड, यस मयूरी, एग्जैक्टली। सो अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी यूजर्स आर अ पार्ट ऑफ द ऐप, राइट? देन वी हैव द सिस्टम विल हैव द प्रोडक्ट कैटलॉग आल्सो। तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। एग्रीगेशन को when we say, yes, Aditya, don't worry, I'll be discussing, right? I will be discussing. It is going to be composition, right? ठीक है? तो a system consists of product catalog, ठीक है? Now, user can be either of type seller and customer. So here we have generalization, right? So user can be of type, तो हमने क्या लगाया? Generalization लगाया यहां पर, ठीक है? इसके बाद customer has a cart, right? Customer has a cart. Every customer will have a cart. ठीक? Then, because you can see this is one to one, right? So customer will have one cart. But cart can have many items. Can you see this? Cart can have many items. Now you see, customer cart is a composition and cart and item is an aggregation. Customer cart is a composition and cart and item is an aggregation, right? Okay, figure out why, like can you figure this out why? तब तक हम आगे बात करते हैं और समझ में आ जाएगा आपको। item and product is like item consists of a product, ठीक है? Again it is a composition, it is an aggregation, right? Item consists of product, ठीक है? Then, if I talk about product catalog consists of many products, right? Product catalog consists of many products. ठीक? Then we have product catalog consists of many categories as well. तो product catalog में क्या आता है? Different categories, list of categories and list of products I have.
right? Then every product has a category, right? Every product has a category. तो देखिए, अब ये देखिएगा, this is association and it is one directional. Product will have a category. अगर ये arrow नहीं होता तो this would have become bidirectional association. So here I have one directional association. Product has category, right? This is simple has a association, which is has a relationship. ठीक है? तो product has a category. It is one directional. इसके बाद seller has multiple products, right? तो ये देखिए, this is bidirectional. This is bidirectional one to many relationship, right? One seller might have multiple products, right? But every product will have a single seller. ठीक है? Here I am assuming that it is like we have the sellers have unique products. ठीक है? Or if they have similar products, I have assigned different product IDs to those products. ठीक है? तो here you can see association one to many. One to many means seller will have multiple products, but every product is associated with one seller. ठीक है? उसके बाद customer can have a order, right? This is also one direction. Customer has a order. तो customer अभी जो order कर रहा है, that is, और उसको मैंने कह दिया रोल नेम दिया, इसको हम बोलते हैं रोल नेम, राइट? तो इस एसोसिएशन को हमने नाम असाइन किया, विच इज ऑर्डर. और कस्टमर, देखो कस्टमर क्लास ऑर्डर क्लास से दो तरीके से इंटरेक्ट कर रही, रिलेटेड है. एक तो करंट ऑर्डर, इसीलिए व्हेन वन क्लास इज in multiple relationship with another class, we need to give role names there. ठीक है? So that I can identify which relationship is corresponding with, like suppose when I'm teaching you, right? There is a teacher, ठीक है? And there is a student, right? When teacher is teaching a student, so the same person, like this is the teacher and this is student, right? And the teacher is teaching the student. In this relationship, when teacher is teaching the student, in this relationship, teacher is a mentor and student is a mentee, right? But when the same teacher takes the test, like give the test to the student, right? So what happens at that time when giving the test, when teacher is giving the test to the student, at that time teacher has become the examiner, right? And the student has become the examinee, or you can put any name. But when these are the two classes, teacher and student, they are engaged in multiple relationships, then we need to give role names to those associations. ठीक है? I hope this is clear to you. उसके बाद क्या होता है? Now we have customer is associated with order, and we have two relationship. Customer might have current order and customer might have order history. And when we are talking about order history, right, we have order history. ठीक है? तो in order history we can have multiple orders, right? That's why we have one to many aggregation. अब देखिए मैं आपको समझाता हूं एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन का एक डिफरेंस, यहां पर आपको समझ में आएगा. देखिए, when I am a customer, right, and I have some order history. Now when I delete my account from this app, my order history should also go, right? It should not exist. It does not, because it does not make sense. Are you getting this? So when the account of customer is deleted, when account will be removed for some customer, ठीक है? When customers or that customer object is deleted, then his order history also does not make sense. That also has to be deleted. So when you have a part of relationship, but the existence of one depends on the existence of another, then you have composition relationship. But as we can see, customer have card, right? And this card has certain card ID, right? A customer account is deleted, his card also has to be deleted. Okay? But see, this item has product. So item has product. When item is deleted, the product does not need to be deleted. Product do exist, right? The product might be
involved in some other cart as well, some other item as well. ठीक है, तो without item the product can exist. ठीक, so but item consists of a product. So here we have aggregation. I hope this is clear. ठीक है, I hope this is clear. So when we say aggregation, there is a part of relationship and the existence of one does not like the part can exist without the whole part, whole thing. Okay? Whereas when we talk about composition, there is a part of relationship and part cannot exist without the existence of whole thing. I hope this is clear. If this is clear to you, please type +1 or please type aggregation. Please type aggregation if this is clear to you. Yes, guys, waiting for the responses. Aggregation, composition. Okay. I am telling you there is no relationship between card and product because card does not contain products. Card will contain the item only. An item is consist of a product. So when you are adding something to a cart, you are adding item to the cart. You are not adding item product relationship because see if you didn't get item product means every item consists of let me tell you right एक बार मैं brief करता हूं अगर आपको item product नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं so when we had requirements right see this was the requirement customer will add item to the cart right. An item consists of the product as well as the quantity, right? When these two things are merged, we are creating one item. Okay? And we are adding items. So here, generally when you do shopping, right, you use these apps. You don't add products, right? You add product as well as their quantity. So what happens is when you order pizza, right? So it never happens like you ordered this pizza and repeatedly it shows you that this pizza. It shows you this pizza has been ordered for like 2 quantities of this pizza has been ordered, right? Like I hope you all might have gone through that shopping experience. It never because pizza that particular pizza is a product, and when you add to something to your cart, you never add multiple pizza to the cart. Okay? You add one pizza and its quantity that becomes an item. So here, this one camera is an item. 2 t-shirts is an item. They are not product. Okay? So I hope you got this now. This confusion is. अगर समझ में आ गया, please type item in the chat box. Okay. So we have done this, right? We'll create class diagrams. अब देखो, okay. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना हमें जरूरी है अभी राइट मैं आपको समझाता हूं व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग थोड़ी सी ना चीजों को समझना जरूरी है एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स ये देखिए ये हमने बात कर लिया ये बात कर लिया था यहां पर एग्रीगेशन कंपोजिशन हो गया अब ऑर्डर हैज ऑर्डर स्टेटस एवरी ऑर्डर हैज मल्टीपल आइटम्स सी द वन वे एसोसिएशन यू कैन सी ठीक है एवरी शिपमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर ठीक है एवरी शिपमेंट हैज वन ऑर्डर अब ये एक चीज ये हमारा क्लास डायग्राम बन गया है but what we need to do is we need to understand one thing and that is when we draw class diagrams there is a scope of refinement and now how do we do those refinements let's see this देखिए अभी हमने क्या किया है order has order status right so we are maintaining the status of the order ठीक है now what happens when this is the order right it contains the order id and it contains the status of this order तो अब मुझे बताओ मैंने ऑर्डर को ट्रैक कर रहा हूं 2 तारीख को 2 ऑन 2nd of May
it was created. On 3rd of May, it has been moved to pending state. So what I did is I updated the status of order to pending. ठीक है? उसके बाद on 4th of May, it was moved to shipped state. It was actually moved to shipped state. So what I did is I updated the status to shipped actually. ठीक है? And on 6th of May, it was completed. The order was delivered and completed. ठीक है? So what I did is I updated the status of order to completed. ठीक है? Tell me guys, is this the correct way to track the order? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? Is that fine? What I've done is with every order, I have maintained the order status, and whenever there is the state of order changes, right? Whenever the state of order changes, I update the value of that variable order status to created, to pending, to shipped, and to completed. Can I track the order? Can I track the order in this way? Like is this how I should be tracking? What if order is cancelled? ठीक है? Like we will update the status to cancelled, right? And we'll maintain the date. We'll update the status to cancelled and we'll maintain the date on which it is cancelled. Right? The problem is on 6th of May, if I want to know when this order was created, right? Or when this order was shipped, I would never be able to figure out. Right? Because I have updated, override those values, I have not maintained the history of this order, right? So when I want to know when this order was created or in moved to pending state or was shipped, okay, on 6th of May, every information is gone, right? It will not be there with me. Okay, yes, exactly. So this is how we are maintaining it in our class diagram. Every order consists of order status. Okay, but this is creating problem for me. So what we do is we will adopt a different method for tracking the order, right? और कैसे ट्रैक करेंगे देखो, अब मैं क्या करता हूं, what do I do now is, जब भी ऑर्डर किसी स्टेट पे जाता है, जैसे क्रिएटेड पे आया, तो मैंने एक एंट्री बना दिया 2 May 2020 and created statement. Now when the state is changed, right, I have added a new entry on it with a date and with the state, right? Now when the state is changed again from pending to shipped, what did I do? I have updated I've added one new entry which is like on 4th of May it was shipped, okay? Or on when 6th of May it was completed, I have the complete history of the product states, right? When was it created? When was it moved to pending state? When was it shipped? And when was it the order completed? Right? So what we have done is we have created a new entry which is called log, and this log consists of a date and the order status. Now if we want to accumulate this thing, right, this concept in our project, okay, how we have to do it? Order consists of order status. अभी हम ऐसे show कर रहे थे, तो we need to create an order log, and we'll say order log consists of order status. Every order log will have the date and order status, and the order will consist of the order logs. It will have multiple orders. Whenever the state is changed, we will maintain the log for that. So we need to reflect this change in our class diagram. So what we do, we create one new class which is order log. We remove this and the order log has order status now. So this is my updated class diagram as per the order classes. ठीक है, order, क्योंकि मेरे को order maintain करने में दिक्कत हो रहा था. ठीक है, that's why I have changed the way of implementing it. Agree? Will this work or not? Type yes in the chat box if this, like type order log in the chat box. Guys, type order log in the chat box if you got this.
Order log in the chat box, guys. Thank you, Arya. Thanks, Akash. ओके, चले तो हम आगे बढ़ते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट अभी हमें समझना है, राइट? वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, राइट? उसको समझे बिना वी वोंट बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट। वी नीड टू अंडरस्टैंड, so this order status is enum now. It won't be a class. It will only contain states. तो ये क्या हो जाएगा? It will be a enum which contains only states. ठीक है? Now we need to understand one more concept which is called interface. तो interface क्या होता है? Anyone, like I would love to have your definitions. How do you see what is an interface when we talk about programming, right? Programming in a language. What is an interface? What is an interface according to you? It's a contract. Rakesh, yes, exactly. Intermediate, no, Ragini. Okay, contract between client and system, a point of interaction. ठीक है, collection of abstract classes, platform to work. Okay, what users see. Okay, इस इंटरफेस की बात नहीं कर रहे अभी हम, ठीक है? मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब ये इंटरफेस सुनते ही मेरे दिमाग में आता है इंटरफेस इज फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट? इन जावा भी लिख देते हैं, ठीक है आकाश? ओके, ठीक है। abstract type that is used to specify a behavior that classes must implement, ठीक है? Inheriting the property of different classes by creating objects. ओके, देखिए मेरे को ना इतना टेक्निकल नहीं समझ में आता है। अगर मैं पहली बार इंटरफेस को समझूंगा तो मेरे को कुछ एक तरीका चाहिए, ठीक है? एक कोई एग्जाम्पल चाहिए जिसकी हेल्प से मैं समझ सकूं। एंड इट इज यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, राइट? ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ठीक है। तो मेरे को एक डेफिनेशन चाहिए समझने के लिए। मेरे को इंटरफेस नहीं समझ में आता, आई डोंट गेट इट दिस वे, ठीक है? बट आई हैव अ गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इंटरफेस, राइट? एंड द एग्जांपल सेज, ये कुछ, डू यू रिमेंबर व्हाट, हु आर दे, राइट? कैन यू फिगर आउट हु आर दे? Communication between classes, Murli Manohar, right? Astha, achieve 100% abstraction, that's good, ठीक है? So we have these players of Indian cricket team, right? These are cricket players, Indian cricket players. So these all are players, ठीक है? मेरे को इतना समझ में आता है ये सब क्या है, ये players है। Now what do I do is, मैं बोलता हूं मेरे पास एक कैप है which is captain's cap, right? ये कैप कैसी है? कैप्टन की कैप है। ये जिसको भी पहना दूंगा he will become the captain. But इस कैप की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, right? This cap has two responsibilities. First one is you have to attend the toss event, ठीक है? And you have to address at award ceremony. तो प्री मैच पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस जो होती है वो आपको अटेंड करनी है और आपको टॉस करने जाना है, ठीक है? तो अब ये कैप अगर मैं किसी को पहना देता हूं, सपोज रोहित शर्मा को पहना देता हूं, तो रोहित शर्मा हैज टू डू दीज थिंग्स, राइट? इफ यू डोंट डू इट देयर वुड बी अ प्रॉब्लम, ठीक है? या तो रोहित शर्मा बीमार है, अगर रोहित शर्मा कैप्टन है एंड ही इज नॉट डूइंग दीज टू थिंग्स, इट इज लाइक इट वुड बी हाईलाइटेड, राइट? इट वुड बी हाईलाइटेड, ठीक है? ऐसे समझ लेते हैं। अगर ये कैप जडेजा के पास है, रविंद्र जडेजा हैज इट, जडेजा हैज टू अटेंड द टॉस इवेंट एंड हैज टू एड्रेस द प्री एंड पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंसेस, राइट? और अगर ये कैप कोहली के पास है, कोहली हैज टू डू इट। सो सी, these all were players, but that cap created the magic. The cap added the responsibility. So when you have that cap with you, you have to do these two functionalities which are associated with this cap, right? I hope समझ में आ रहा है, ठीक है? तो कैप क्या है? कैप एक ऐसा इंटरफेस है। अगर मैं प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो कैप इज एन इंटरफेस, और ये जिसके भी पास है, ठीक है, जिसके भी पास है
उसको इस इंटरफेस की जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और प्रोग्रामिंग टर्म में हम इसको ऐसे बोलते हैं कि वी हैव डिफरेंट क्लासेस, राइट, एंड वी हैव अ इंटरफेस, right? And any class that implements the interface, याद रखिएगा, classes extends another classes, so user class will be extended by the seller class and customer class, but the interfaces are implemented by the classes. And when class implements the interface, it has to follow the functionalities of the interface, right? तो प्रोग्रामिंग में हम क्या बोलते हैं कि उसको उन फंक्शंस को सपोर्ट करना पड़ेगा जो कि इंटरफेस के फंक्शंस हैं। अब देखिए, व्हेन रोहित इज अटेंडिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, राइट? विराट इज अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस, उसका अपना स्टाइल, बोथ हैज टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस, but they have their own style of attending the conference or talking to the media, right? Similarly, when classes are implementing the interface, they can decide their own functionalities of the functions. ठीक है, वो अपना खुद का तरीका बता सकते हैं इस फंक्शन को बताने का कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा, ठीक है, बट दे हैव टू डू इट। मैच जो कॉन्फ्रेंस है वो दोनों को अटेंड तो करना ही पड़ेगा, जो भी कैप्टन होगा, दैट इज फॉर श्योर, बट they have different way of attending those conferences. Similarly, when a class is implementing the interface, it has to provide the meaning to these functionalities which are being asked by the interface. ठीक है, अब ना आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा, ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि where do we see इंटरफेस इन आर क्लास डायग्राम, मेरे क्लास डायग्राम में कहां जरूरत है, ठीक है? तो अब देखिए, जरूरत यहां पर है जो प्रोडक्ट कैटलॉग जो क्लास हमने बनाई है, राइट? मैंने एक रिक्वायरमेंट आपको दिया था, यूजर शुड बी एबल टू सर्च द प्रोडक्ट्स ऑन आवर ऐप, राइट? और उसके लिए व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू मेक श्योर दैट माय प्रोडक्ट कैटलॉग इज सर्चेबल। तो मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा searchable which has the functionality of search, right? उसमें, and when this product catalog class implements this interface, it has to provide the search functionality, ठीक है? So what we have done is anything can be searchable, right? Anything can be searchable. So why I have not associated the search function on my product catalog? Because product catalog does not mean to do that, right? प्रोडक्ट कैटलॉग के लिए जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट कैटलॉग की और भी फंक्शनलिटीज हो सकती है, वो सर्चेबल इंटरफेस को करेगा, ठीक है, वो इंडेक्सेबल इंटरफेस को सर्च वो करेगा, तो अपने जो आइटम्स है, प्रोडक्ट्स है, उनको इंडेक्स भी करके रख सकता है, ठीक है? सो इट डिपेंड्स, राइट? तो हमने क्या किया, इसीलिए एक इंटरफेस बनाया, विच इंटरफेस एक्चुअली एज मोस्ट ऑफ यू टोल्ड, राइट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना है कि आपको सर्च फंक्शन को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, यू हैव टू इंप्लीमेंट द सर्च फंक्शन, ठीक है, व्हेन यू इंप्लीमेंट्स द सर्चेबल इंटरफेस, ठीक है? आई होप यू गॉट दिस, राइट? आई होप यू गेट दिस। तो हमने क्या किया, अपने क्लास डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, एंड द प्रोडक्ट कैटलॉग नाउ इंप्लीमेंट्स द सर्चेबल इंटरफेस, ठीक? आई होप दिस मेक्स सेंस। क्या क्लास डायग्राम में जितना भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आया आपको? डज दैट मेक सेंस टू यू पीपल? क्या उसमें कुछ भी सीखने को मिला? इफ यस, प्लीज टाइप +1 इन द चैट बॉक्स, और प्लीज टाइप step 3 in the chat box if you step 4 in the chat box if you want to move to step 4. Yes guys, if you want me like step 3 अगर क्लियर है तो एक बार टाइप कर दीजिए step 4 so that we can proceed to step 4. Okay. ठीक है, मीनवाइल मैं आपको बता देता हूं, देयर इज अ फॉर्म आस्क मी एनीथिंग, आप उस फॉर्म पर डाल सकते हो अपनी क्वेरीज वगैरह, ठीक है? आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड ओवर देयर, रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज, ठीक है? सेशन का टाइम अभी कम बचा है, we'll try to answer your queries, right? Okay, that's fine, ठीक है? तो अब देखिए, जो मेरा क्लास डायग्राम है वो एक्चुअल में कैसा बनेगा, देखिए, दिस वुड बी माय क्लास डायग्राम, माय फ्लिपकार्ट, एंड इट हैज दीज फंक्शंस, एडिंग यूजर, ऐड यूजर, रिमूव यूजर, ठीक है? यूजर, तो यूजर
as these properties, right? उसका आईडी होगा, नेम होगा, एड्रेस होगा, यूजर नेम होगा, it has some password, right? And it has login, register, these functionalities. User can log in, user can register. And you can see this class diagram, if you will figure out the at the top, user, the name is written in italics. That means it is going to be an abstract class. Okay? Whereas seller and customer, which are the child classes of it, they will be normal classes, concrete classes. Okay. Then we have cart. Cart will have these properties: adding item, removing item, update item count. So we can update the count items, like item count in when the item has been added to the cart. Okay. We can clear the cart. Then we have item. Okay. Item is every item has a product ID, because item consists of product, so it will have product ID. It will have count, like how many products we are ordering, right? And then we have the price of the item. Okay. Then we have product catalog. Then we have searchable interface. It has some functionality called search product. Okay. And this function has to be implemented by this product catalog class. Okay. So it has some map. So what we have done is we are maintaining a hash map over here, if you can see. Category product map. So we are maintaining a hash map of category and the products. So whatever products are there in the category, they fall in the category, we can directly fetch them out of the hash map. See? Then we have a product. Then we have a category class. See? We have order class, which has these attributes. Order log. Order status will be pending, created, unshipped, shipped, cancelled. Okay. Then we have shipment class, and this would be our final class diagram. Okay. This is how the real class diagram will look like. Okay. Okay. So we will move to code phase. To what is the next step is creating the skeleton code. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, जितनी क्लासेस हमने बनाई, क्लास के एट्रीब्यूट्स हमें पता है, उन क्लास के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को हम वहां पर बनाएंगे. ठीक है, विल क्रिएट दोस क्लासेस, विल क्रिएट दोस स्केलेटन कोड्स, राइट. और उसके बाद ठीक है विल राइट द कंप्लीट फंक्शनैलिटी. ठीक, तो स्केलेटन कोड बनाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज आई कैन ओपन द IntelliJ. ठीक, and let me know if the font size is visible to you, right? I will create the class, right? सबसे पहली क्लास मैं बनाता हूं यहां पर. We create a class called category. Okay. And in category, if I'll go back my class diagram, right? So in category, if I'll see, it has two attributes. First one is name and second one is description. Both are strings, right? So let's go there and create attributes like, so what you do is whatever class you see over there, ठीक है, उसका हम attribute बनाते हैं. Then we have category has a name, ठीक, and it has description. And when we create these, we create them private, right? Because we want them to be accessible, right, with the help of their getter setter methods only. ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं वो getter setter method के थ्रू ही accessible हो. तो we generate the getter setters. यहां पर मैं if you are handy on IntelliJ, you can press Alt Insert getter setter, ठीक है, and you can select both the things, right? And we also need to create constructors. तो वो constructors भी हम directly बना सकते हैं. ठीक है, so this is how we have this category, right? इसके बाद we'll see another class which is like product class. तो product class को देखते हैं. Product class has attributes like, product class के attributes क्या कहते हैं? Product has ID, name, description and price. तो
we'll create another class over here. Like, let me create a class, this product class. Okay, and product has the values like, let me check. Product has some ID, and product has string name, and it has the description, which is again a string. Okay, and then it has price, which is double. Okay, and this was it, right? This was it. It has price. Now we create getter setters for this, and we also need to create a constructor, but we'll see how to create constructors. उसको बाद में देखते हैं. पहले इसके लिए हम getter setters create कर देते हैं. Let's create getter setters. ठीक है. And now you see one thing. कैसे हम एसोसिएशंस को कन्वर्ट करते हैं. देखिए, प्रोडक्ट हैज अ कैटेगरी एंड दिस इज वन डायरेक्शनल, राइट? इफ यू कैन सी दिस, प्रोडक्ट हैज अ कैटेगरी एंड दिस इज वन प्रोडक्ट विल हैव अ कैटेगरी. तो इसको कैसे बनाएंगे अपने क्लास में? यहां पर we'll go to this product class and we'll create a attribute, right, where it has category. Okay, so this product has a category and we need to create a getter setter for this as well. वो हम create कर सकते हैं आराम से बाद में, बट वो करना पड़ेगा. ठीक है, product has category हमने बना लिया. उसके बाद we need to create abstract class. तो अभी यहां पर देखते हैं. देखिए, we have abstract class user. तो जब abstract class user है तो what I need to do? I need to create a class user. So I'll go here, create a class user. Okay, and let me make it as abstract, right? And what attributes it has? It has private integer ID, then it has string name, it has string address, and it has username, and it has password. ठीक है, एंड सम फोन नंबर वगैरह, तो अगर वो भी हम ऐड कर सकते हैं. ठीक है, बट वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज वी नीड टू क्रिएट टू मोर क्लासेस, राइट? अगर मैं यहां देखूं तो अब मेरे को देखो दो क्लास बनाना है. फर्स्ट वन इज सेलर. तो आई नीड टू एक्सटेंड दिस क्लास. तो जो हैज अ रिलेशनशिप है, दैट मींस सेलर कैसे बनाऊंगा मैं इसको? एक्सटेंड्स यूजर. Okay. Now, if seller has some attributes which are different from this, I can add those. तो हम देखते हैं क्लास डायग्राम को. We'll see seller. अब देखिए, seller has products, list of products. तो seller has multiple products, right? Seller has multiple. If you'll see this, ठीक है. तो मेरे को क्या करना है? मेरे को यहां चलना है. Or seller will have a list of products. So we'll create array list of products and name it as products. Right. So you might be getting idea, right? How we are adding associations as in our code, right? So associations को कैसे add कर रहे हैं? We are seeing that. ठीक है. Similarly, we have one more class which is like, we have one more user which is like customer.
So I'll create a class corresponding to it. We have a class customer. ठीक है? And this also extends from, so I'll write extends and then I'll write user class. ठीक है? Do customer have some properties? Let's see. तो customer has order, ये भी हम बनाएंगे. Customer has a cart, ठीक है, and nothing else. तो हमें कार्ट, पहले एक कार्ट क्लास बनाना पड़ेगा. We need to create a class called cart, ठीक है. और कार्ट से पहले we need to create item. Let's create item first. Let's create a class called item, and we can see item में देखो अगर आप, item has ID and it has count and price, ठीक है. तो item has, you'll see, it has product ID, it has count and it has price. So what will I do? Let me do it. Because it is going to be product ID, I am writing it as complete product ID over here. Okay, it has count or quantity. Let me do it as count. Okay, and it has price, right? We have it over here. Again, we need to create generator. We need to generate getters and setters for it. We can do it. Now we need to create a class cart which has which has a product into it. Okay, we can do it this way. So what I can do is I can share the complete code with you. Okay, let's see this. So देखो, we have a cart. This cart has the item list. Cart has list of items, right? And we can add items, remove items, update items, right? We can get the item list also, what items it have. Then we have the product class. Product we have seen. So this is ID counter created static because we need to generate. We need to create an automatic ID. We want automatic ID to be created. That's why I've created this static ID counter for it. Okay. Then we have all these things. It has a seller which we have included. उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग क्लास को देखते हैं. देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो प्रोडक्ट कैटलॉग हैज अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, राइट? सो प्रोडक्ट कैटलॉग हैज अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लिस्ट ऑफ कैटेगरीज एंड इट मेंटेन्स अ हैश मैप ऑफ कैटेगरी प्रोडक्ट्स, राइट? तो हमने हैश मैप बनाया किसका? कैटेगरी और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का. और हमने हैश मैप बनाया प्रोडक्ट्स कैटेगरी प्रोडक्ट सेलर का, प्रोडक्ट और उसके सेलर्स का, ठीक है. एंड व्हेन वी आर गेटिंग प्रोडक्ट कैटलॉग तो हम इस तरीके से हैश मैप्स बना रहे हैं, ठीक है. और सिमिलर प्रोडक्ट्स का भी हम लोग ये आप बना सकते हो. इफ यू वांट यू कैन यूज इट, राइट? सो this is my product catalog class looks like, but see this, it implements searchable interface. This is what I wanted to show you. It implements searchable interface. और जब searchable interface है तो आप ये देख सकते हो searchable interface जो मैंने बनाया, it is like this. Searchable interface gives me search product and search category. I can search any product, I can search any category, ठीक है. These are only declarations given and these are implemented here in my product catalog. Search product, so out of hash map I returns the product, right? Search category out of hash, so these are overridden functions, if you can see this. ठीक है. And again we have order class. Let me show you the order class. Order class consists of some, like this is for maintaining auto increment counter, ठीक है. Then order number, order status, order date, then we have items, shipping addresses, order logs. इस तरीके से we can have this complete. Then we have order logs. Order log consists of creation timestamps,
and the status. Order status could be these status because it is an enum, you can see. Created, pending, unshipped, shipped, cancelled, completed. All these are the states. Then we have our main class, which is my Flipkart class. This is some dummy data which has we have tried to add to the product catalog. It consists of product catalog and consists of user also. We have not added over here. Okay, users list, and this is how we have created like different functionalities supported by this. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज आई कैन शेयर दिस कंप्लीट कोड विद यू. तो आपका जो एक फॉर्म है ना, आस्क मी एनीथिंग का एएमए वाला, आप उस फॉर्म पे वो डाल दो, क्वेरी में लिंक वो कोड डाल दो. सिर्फ यू राइट कोड इनटू द क्वेरी. क्वेरी की जगह सिर्फ कोड आप लिख दो वहां पर. तो आई शेयर दिस कोड विद यू ऑल. ठीक है, मैं वो सब शेयर करवा दूंगा. आई होप समझ में आया वो आपको. थोड़ा सा जो हमने कोशिश किया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस को जो फॉलो करने का कोशिश किया. ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू पिक अप योर डाउट्स. राइट, थोड़ा सा लेट मी पिक अप बिकॉज वी हैव ओनली लेफ्ट फॉर 10 मिनट्स. ठीक है, डोंट पुट हियर, डोंट पुट कोड हियर. देयर इज अ फॉर्म, राइट, देयर इज अ फॉर्म which contains like ask me anything. There is a form. You need to fill that form and in your query simply write code. Okay. आपको फॉर्म सबमिट करना है और उस फॉर्म पे कोड लिख देना है. कोड सिंपली इफ यू राइट कोड इनटू इट, आई शेयर द कंप्लीट कोड विद यू ऑल. Meanwhile, let us check out the queries from this form, right, that you have filled. Okay. Which resources would you recommend to learn and master OOPS and OAD both? Rohan has this question, right? You will get it, right? You will get it after the session. Don't worry. You will get the code after the session. Okay. Let me try to answer your queries, right? So this is one query. Okay. Which resources would you recommend to learn and master OOPS and OAD? See, generally, if you'll see, we have those standard books, right? And we follow those standard books. There is Rambagh, right? Which you go through. But if you want to learn OAD and OOPS correctly, okay? So there was a book that I read actually was Mastering. I don't exactly remember the name, but that was quite book. It took a very good example and moved like to the completion of project. Like जैसे मैंने आपको समझाया यहाँ पर एग्जाम्पल या रिक्वायरमेंट्स पूरा बनाया और उसके बाद जो है ना पूरा कंप्लीट किया. ठीक है, तो what you can do is you can follow certain what should I say? Just a second. Let me search that book, right.
Okay, so it is like head first object oriented analysis and design. ठीक है, a brain friendly guide to OOAD. I hope that will help you a lot, right? I like that will help you a lot. तो आप उस बुक को एक बार फॉलो करके देखिए. बाकी इफ यू कैन लाइक मैं जैसे ही पहले बोला, तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड दीज एनिमेशंस. वी हैव ट्राइड टू क्रिएट द ओएडी इजी फॉर यू. ठीक है, हमने काफी थोड़ा सा ना मतलब एनिमेटेड वे में, जिससे कि आप समझ सको चीजों को, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो. We have created the course on low level design where you have like अगर उस book को आप follow करोगे, it has taken only one case study, right? There we have completed about like 20-25 case studies, right? जो हमने cover किया उसमें. और जब आप 25 केस स्टडीज कंप्लीट कर लेते हो ना, आफ्टर दैट थॉट प्रोसेस आपके अपने आप ही दिमाग में आता है. ठीक है, यू कैन गेट टू द सॉल्यूशंस ऑन योर ओन, राइट. जब आपने 25 केस स्टडीज कर रखी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कर रखी है उनकी, तो वी हैव फोकस्ड ऑन द केस स्टडीज रादर देन द कॉन्सेप्ट्स, राइट. तो यू कैन गिव अ ट्राई अगर आप चाहो तो. दिस वाज रोहन्स क्वेश्चन, राइट. लेट मी पिक समवन एल्स. OAD in Python is good, but generally what happens, see, Python में मुरली मनोहर ऐसा क्वेश्चन, राइट. OAD in Python तो आप प्राइवेट नहीं बना सकते. प्राइवेट अगर आप बनाते हो अंडरस्कोर अंडरस्कोर करके ना, तो दैट इज ऑल्सो कैन बी एक्सेसिबल, राइट. मेरे को पता चल जाएगा कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं. मैं DIR मेथड से आपके सारे वेरिएबल्स चेक कर सकता हूँ और उसके बाद उनको एक्सेस कर सकता हूँ. तो प्योर जो वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं मिलती है, बट स्टिल यू कैन इम्प्लीमेंट, राइट. यू कैन, इफ यू वांट टू ट्राई, यू कैन इम्प्लीमेंट OOAD इन पाइथन इफ यू आर अ बिगिनर, राइट. बिगिनर. Okay, so Nagini has very good question, right? Sir, please tell books which is less in weight for beginners, right? Less in weight, ठीक है. तो less, it is very simple. Head first object oriented. मैं share करता हूँ. Let me share the name of that book also. So it is this book, right? मैं यहाँ पर चैट में डाल दे रहा हूँ. This one, head first object oriented analysis and design. डाल दिया अभिषेक सर, डाल दिया है, चैट में डाल दिया है. अच्छा, टेल मी वन थिंग. एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे लेना, मैं छोटा सा फीडबैक आपसे लेना चाहता हूँ. ठीक है, यू ऑल माइट हैव गॉन थ्रू दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंग, राइट. डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस टुडे व्हाइल लर्निंग दीस कॉन्सेप्ट्स? डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा अलग था? योर फीडबैक्स, राइट, जेन्युइन फीडबैक्स. डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस? Okay. Thanks, guys. Thanks a lot. Thanks for it. That so good feedback, right? Okay. See, my approach is always right. What do I believe is there are two types of, like, no one is weak, right? No one, no, none of the student is weak, right? The only difference is when reading the text, one is able to make that mental image, and other is struggling to make that image, right? Other जो दूसरे की image बनती है वो थोड़ी scattered बनती है. So if we can create good visuals to make the same image in the mind of the one who is struggling actually, ठीक है, तो we can level him up and make him compete with the one who has already created that image easily, ठीक है. So that is what I believe in. That's why I always works on the visual part. Whenever I teach coding, whenever I work on these things, I always works on visuals, right? So if you can see recursion happening, right, recursion would never be a problem. Okay, it would be very easy. Okay, that's what I believe in. ठीक है, और डाउट्स मैं पिक करना शुरू करता हूँ. Meanwhile, जल्दी से कोड डाल दीजिए उस पर, so that you can get the access to the code as well. गूगल फॉर्म है, गूगल शीट पे फॉर्म है, फॉर्म फिल करना है आपको, और क्वेरी पे कोड डाल दो, खाली कोड, ठीक है, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द कोड, राइट.
I'll get your email addresses and I'll provide you the code. ठीक है. Then we have okay. So this is right. Ishan Shah, right? Ishan has one question. Ishan, very good question, right? I'll love to answer that. So here is this Ishan's question. Shreya said, how to approach my any new low-level design question? Also, please share some good resources for low-level design interviews, right? तो लो लेवल डिजाइन के लिए मैंने आपको बताया, फर्स्ट मैं अपने आपको प्रमोट करता हूँ, ठीक है? एक बार आप उस कोर्स को ट्राई करके जरूर देखिए एंड लेट मी नो द फीडबैक्स. उसके बाद if you're looking for the resources, try to think of the problems, right? कोई भी प्रॉब्लम आप उठा लो, whether it could be ATM machine, it could be a flight system, ठीक है? कैसे आप मैनेज करोगे, उबर कैसे बना होगा, उबर को अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस करना है, कोई भी आप रियल टाइम, ओयो कैसे बना होगा, उबर कैसे बना हुआ होगा, ठीक है, ओला कैसे बना हुआ होगा. यू कैन टेक दीज एग्जांपल्स एंड ट्राई टू वर्क देयर वे आउट, राइट, कि उन्होंने कैसे डिजाइन किया होगा, किस तरीके से स्ट्रक्चर. बुक माई शो है, राइट, बुक माई शो इज वेरी सिंपल, बट हाउ दे वुड हैव हैंडल दोस कॉन्करेंट बुकिंग थिंग्स, ठीक. इस तरीके से आप चेक कर सकते हो चीजों को ना. और जब आप प्रॉब्लम देखो, सीखने से ज्यादा अच्छा होता है आप कुछ करने की कोशिश करो. आप सोच लो ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये सोचना है, आई नीड टू फिगर आउट कि ओला कैसे इंप्लीमेंट हो रखा है, ओला ने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया होगा कैसे बनाया होगा, कोड स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ होगा, और मुझे खुद ओला बनाना पड़ेगा. इफ आई नीड टू क्रिएट माई ओन ओला, विल आई बी एबल टू मैच देयर स्टैंडर्ड्स, राइट. तो पहले आप खुद बनाने की कोशिश करो, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक. उसके बाद जो है ना हम लोग बात करेंगे इस पर, ठीक है. आई होप दैट विल हेल्प, राइट, दैट विल हेल्प. तो बाकी क्वेश्चंस उठाओ, केस स्टडीज उठाओ और उन केस स्टडीज को शेयर करो, अपना एक स्ट्रक्चर बनाओ, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और उनसे पूछो कि क्या रह रहा होगा, क्या कर अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, ठीक है, कि क्या ये परफेक्ट सिस्टम बना है, क्या हम इससे अच्छा कर सकते हैं. एंड प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड दोस कॉन्सेप्ट्स. Akash, I'm talking about the low-level design for SG1 course at Geeks for Geeks, right? And you can enroll it. It's very low cost, like very pocket-friendly cost. तो एक क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई वुड लव टू आंसर दैट, ठीक है. एंड आफ्टर दैट आई विल एंड अप द सेशन, ठीक. लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन. दिस इज वन ऑफ द गुड. This is the question from Alok Ranjan Srivastav, right? Alok has the question which is better in OOPS, Python or C++. So let me tell you, Python, C++. Python मैंने अभी आपको बताया था, one thing which is like when you are implementing things in Python, you can give the object oriented behavior, but it is not complete object oriented, right? It is pseudo object oriented thing, ठीक है. जब हम प्राइवेट वेरिएबल्स बनाते हैं तो दे आर pseudo प्राइवेट वेरिएबल्स एक्चुअली, ठीक है. बट इन जावा एंड सी प्लस प्लस यू विल गेट द रियल एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंग, ठीक है. बट इफ यू वांट टू ट्राई, अगर आप पाइथन बैकग्राउंड से हो, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, यू कैन एक्चुअली, यू कैन, ठीक है. और उसके लिए कुछ नहीं करना आपको. एक बार अगर आप देखो, एक बार आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिहेवियर सीख जाओगे, चीजों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से इंप्लीमेंट करना सीख जाओगे, तो व्हाट एल्स इज, फिर लैंग्वेज का मेरे को नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ता है, ठीक है. लैंग्वेज डज नॉट मैटर, ओनली सिंटैक्स इज देयर एंड सिंटैक्स आप देख करके फॉलो कर सकते हो. सिस्टम डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन आर डिफरेंट, राइट. थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में हम हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा, प्रोडक्ट होगा, वो किस तरीके से, मतलब मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है, कितने मॉड्यूल्स बनने हैं, कितने मॉड्यूल्स में इंटरेक्ट करेगा, उस तरीके से काम करता है. सिस्टम डिजाइन में आप और अलग लेवल पर जाकर के बात करते हो, उसका कितना लोड हैंडलिंग कैपेसिटी है, ठीक है. आपने जो ये बनाया, ठीक है, सिस्टम जो बनाया उसको और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे स्केलेबल बनाया जा सकता है. मेरे ख्याल से सिस्टम डिजाइन में इन चीजों पर ज्यादा फोकस रहता है, रादर देन कि सिस्टम का डिजाइन कैसा होगा. वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लो लेवल डिजाइन पर बात करते हैं.
How will I study this code like line by line? Can you help me? You don't have to study this code, right? The Udepan, you don't have to study this code. ये कोड आप रख लो अपने पास, ठीक है? इसको बैकएंड पे रखो. Try to develop your own code. जो मैंने पूरे स्टेप्स आपको समझा दिए, उनसे अपना खुद कोड बनाने की कोशिश करो. And then try to match your code with this code, right? उसके बाद सी कि कहाँ पे मिसिंग है, क्या चीज आपने नहीं सोचा और इसमें सोचा हुआ था. फिर ऐसे दिस इज हाउ यू इंप्रूव योर सेल्फ, राइट? इफ यू रीड द कोड डायरेक्टली यू आर नेवर गोइंग टू लर्न एनीथिंग, दैट्स फॉर श्योर. ठीक है, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, डेवलप इट, कंपेयर इट विद अदर्स कि वो कैसा हो रखा है. तो इस कोड को जो मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है, उसको प्लीज 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 पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, उसको नहीं करना है कुछ भी. आपको अपना इंप्लीमेंटेशन करना है और फिर उसको मेरे कोड से आपको कंपेयर करना है. ये करना है आपको. Yes, Alok, everything in Python is an object, right? Object. But you try one thing. You try to create private variables in Python, right? एक छोटा सा टास्क आपको दे रहा हूं, वो आप करके देखिएगा, ठीक है? Then you will realize whether you can create private variables in Python or not. ठीक है? Okay, so that's all for today's. Like, I hope you all have enjoyed the session. ठीक है, अगर लगा है तो एक बार लास्ट में +1 टाइप कर दो यार, तो मैं सेशन को थोड़ा एंड अप कर दूं. ठीक है, और बाकी कोई क्वेरी कोई डाउट रह गया है तो विल ट्राई टू, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और विल आवर टीम एंड मी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू योर कमेंट्स, राइट? ठीक है, एक बार +1 टाइप कर दो लास्ट में, सो दैट वी कैन एंड द थिंग्स अप हैप्पीली, राइट? यू ऑल हैव बीन वंडरफुल, राइट? Listening so patiently, understanding things, and I hope you liked it. I hope you liked it. ठीक है, थोड़ी सी कोशिश किया था, आप लोगों को पसंद आई चीजें, ठीक है, and I hope I succeeded. चलिए, thank you guys, thank you very much. Let's end up the stream then.